Question number 51. With reference to mammals, consider the following statement. Some mammals lay eggs instead of giving birth to live young. Some mammals lack mammary gland, and some mammals are covered with scale rather than hair or fur. So here, one basic features or basic characteristics of every mammals is that the presence of mammary gland is a defining feature of unitary features of any mammals. ठीक है. So second is wrong because mammary gland is one of the defining and unitary feature of any mammal. So second is wrong. So only two statement is correct, that is some mammals lay eggs instead of giving birth to live young, and third statement is some mammals are covered with scale rather than hair or fur. ठीक है. Now second question number 52. With reference to Article 6 of the Paris Agreement, consider the following statement. It provides a framework for voluntary cooperation among the countries to achieve the nationally determined contribution. True. First statement is correct. काफ़ी generic है. It establishes a global carbon tax mechanism which is applicable to all the participating countries. No, ग्लोबल कार्बन टैक्स मैकेनिज़्म तो है, बट ये ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, दैट इज़ जो भी आर जनरेटेड अंडर द सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म supervised by the UNFCCC. So this statement is again wrong because internationally transferred mitigation outcome are the multilateral agreement between the country. It is not a centralized mechanism. ये कोई एक centralized mechanism नहीं है, but it is the multilateral agreement between the country. So इसीलिए first and second is only first statement is correct. Now question number 53. Recently, the first scientific assessment has established Kaziranga National Park Tiger Reserve as a stronghold of the fishing cat. So, fishing cat is mainly found in the region of Western Ghat, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली एंड हिमालयन रीजन में मिलता है इन इंडिया में, एंड इट इज़ अ मीडियम साइज वाइल्ड कैट फाउंड प्राइमरली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट एनिमल ऑफ आसाम. रॉन्ग. इट इज़ स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल. सो सेकेंड इज रॉन्ग. इफ सेकेंड इज रॉन्ग, बी एंड डी गॉन, B gone, D gone. Then option A and C left. It is listed as endangered, not it is listed at vulnerable categories. So again option C gone. We left with option A. ठीक है. Next question is, which of the following statement best describe the sargassum recently seen in the news? Sargassum is they are group of brown algae that provide food, refuge and breeding ground for many marine animals. So sargassum is recently seen in the news and it is related with brown algae that provide food, refuge and breeding ground for many marine animals. So option B is correct. Now sargassum और सरगैसो सी सरगैसम वो. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कार्बन क्रेडिट्स. कार्बन क्रेडिट्स रेफर्स टू कार्बन एमिशन रिडक्शन और रिमूवल measured in ton of carbon dioxide equivalent. Carbon credit mechanism are the part of Paris Agreement. Company is allowed to sell carbon credit only to other countries only to another companies located in the same country. काफ़ी vague statement है. 3 gone. We left with option 2. Now question number 56. Freshwater river serve as a primary and readily accessible source of water for substantial proportion of the global population. Of course, जहाँ पे हमने काफ़ी पहले से सुना आ रहा है हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में
ये सुने हैं कि जो भी रिवर वाटर होता है, रिवर वाटर के आसपास जो भी टेरिटरीज इस्टेब्लिश होते हैं या फिर जो भी अलग अलग हमारे बड़े बड़े जो एरियाज़ और डेवलप होते हैं वो सब रिवर के आसपास ही डेवलप होते हैं। सो ये तो एक वन ऑफ द बेसिक फीचर है। रॉ मटेरियल होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, ये सब तो बेसिक फीचर होता है कि हाँ इसके आसपास जो भी लोकेटेड होता है एरियाज़ वो सब काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। तो लोग वहाँ पे ही देखते हैं कि हम यहाँ पे अपना जो भी एरियाज़ है वो यहाँ पे ही हो, ऐसा लोग चाहते हैं। बट द डोमिनेंट शेयर ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर reserves is present in surface earth bodies, particularly river. So this statement is wrong because हमने ये काफ़ी easy सा statement है because हमने geography में ही पढ़ा है कि ग्लेशियर अबाउट 68.7% ग्लेशियर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, देन ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 30.1%. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो फर्स्ट इज करेक्ट बट ऑप्शन डी इज ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स. सो ऑप्शन we have option C correct. नाउ स्पेस डेक्स मिशन, ये तो पता ही है कि डॉकिंग यूज फॉर सम डॉकिंग स्पेस डॉकिंग स्पेस डॉकिंग के लिए होता है. मिशन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इन स्पेस डॉकिंग यूजिंग 2 स्मॉल स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड स्पेस डेक्स मिशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. क्वांटम टनलिंग अकर ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. नहीं, पहले माइक्रोस्कोपिक पे होता था, अभी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक तक ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक तक ही नहीं होता है, काफ़ी ओनली माइक्रोस्कोपिक लेवल तक नहीं होता है. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. रेडियो एक्टिव डिके इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम टनलिंग. ट्रू. Quantum tunneling allow the particle to move faster than the speed of light. No, this statement is wrong. This do not allow. Quantum tunneling do not allow the particle to move faster than the speed of light. Again, we left with option A only. ठीक है. Question number 59. Which of the following statement is correct regarding the general difference between the nuclear fusion reaction and nuclear fission reaction? Of course, जब दो फ्यूज़ करता है, एटम फ्यूज़ करता है, उससे फ्यूज़न रिएक्शन होता है जो हम मेनली सन में देख रहे होते हैं. सो ये फ्यूजन रिएक्शन होता है. एंड फिजन रिएक्शन जो नॉर्मली हम करते हैं वो होता है फिजन रिएक्शन. ब्रेकडाउन होके फिजन रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. न्यूक्लियर फिजन इज़ मेनली जो हम सन में देखते हैं. सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज़ जनरली रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन कंपेयर टू द फिजन. ऑफ कोर्स इसमें प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होता है. सो फर्स्ट इज़ करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ unlike nuclear fusion, nuclear fission can sustain a chain reaction under controlled condition. So no, nuclear fission can sustain a chain reaction under a controlled condition. नहीं पता, देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में. पहले थर्ड देखते हैं फिर सेकेंड. फ्यूजन रिएक्शन typically generate long-lived radioactive waste compared to that produced by fission reaction. Wrong. फ्यूजन रिएक्शन काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज़ गलत. थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. बी लेफ्ट विथ ए और डी बिकॉज फ्यूजन रिएक्शन काफ़ी सही होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू फिजन रिएक्शन. इसीलिए काफ़ी फ्यूजन रिएक्शन को प्रमोट किया जाता है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. बट आता है सेकेंड स्टेटमेंट पे. अनलाइक द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन. ऑफकोर्स फिजन में क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है. एंड फ्यूजन में कोई चेन वेन रिएक्शन नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 60. सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट. इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. Now question number 60. With reference to gravity bomb is associated with USA. It followed a ballistic trajectory under the influence of gravity. It is a munition
that does not have any internal engine, of course इसका कोई internal engine नहीं होता है. It can carry either conventional or nuclear payload. So of course all the statements are correct. It follow a ballistic trajectory under the influence of gravity. It is munition that does not have internal engine. It can carry either conventional or nuclear payload. So all the statements are correct.